Join me as I dive into the heart of Jerusalem to face the wildest fire nightmare. Can I navigate through the chaos and capture the real story behind the flames? A massive wildfire has engulfed Jerusalem, leaving a trail of destruction and chaos in its wake. This isn't just any ordinary fire, it's a nightmare that's gripping the city. Testing the mettle of its residents and the authorities. The urgency of the situation cannot be overstated. With flames threatening to consume everything in their path. Climate change played a significant role in this disaster. With rising temperatures and changing precipitation patterns, creating a perfect storm of fire-friendly conditions. Human activities such as deforestation and land development also contributed to the fire's spread and intensity. Moreover, warnings from experts and authorities were ignored. And the situation was exacerbated by a lack of preparedness and inadequate emergency planning. The challenges posed by this wildfire are multifaceted. Environmentally, the fire is a disaster, Hollywood Hills. destroying Just habitat. a few, I want to say, not more than a mile away from us. And potentially leading to long-term ecological damage. For the people of Jerusalem, it's a terrifying ordeal, with homes and livelihoods under threat. Economically, the impact will be significant, with businesses and infrastructure likely to be affected. The city's emergency services are working around the clock to combat the blaze, but it's a tough battle against a relentless enemy. The causes of the wildfire are still being investigated, but the affected areas are widespread, with several neighborhoods and outskirts of Jerusalem directly in the line of fire. Local authorities and firefighters have been quick to respond, with emergency services stretched to the limit as they battle to contain the blaze. The people of Jerusalem are showing remarkable resilience in the face of this disaster, but it's clear that the situation is dire. As the fire rages on, one of the most dramatic moments came when a group of residents found themselves trapped by the advancing flames. With firefighters working tirelessly to create a safe passage, the situation seemed hopeless. But then, in a turn of events that can only be described as miraculous, a team of emergency responders managed to clear a path, leading to a harrowing escape. The bravery and quick thinking of these responders undoubtedly saved lives that day. The fire began to spread rapidly on a fateful day, with strong winds fanning the flames and driving them across the countryside. Firefighters and emergency responders sprang into action, battling the blaze with everything at their disposal. However, they faced numerous challenges, including rugged terrain, limited resources, and the sheer scale of the disaster. As the fire raged on, responders worked tirelessly to contain it,
but their efforts were often hindered by shifting winds and inaccessible terrain. As the wildfire reached its peak, entire neighborhoods were reduced to ashes and homes were destroyed, leaving families without a place to call their own. The emotional toll on residents and responders was immense, with many left traumatized by what they witnessed. The fire also had a devastating impact on local wildlife, with countless animals perishing in the blaze. The once lush landscapes were now charred and blackened, a stark reminder of the fire's fury. The aftermath of the wildfire saw a massive effort to recover and rebuild, with emergency services and aid pouring in from across the country. As the dust settled, it became clear that this disaster would have a lasting impact on Israel's environmental policies and emergency preparedness. The devastating wildfire that struck Israel was a disaster of unprecedented scale, leaving a trail of destruction in its wake. Communities were ravaged, wildlife habitats were decimated, and the environment suffered irreparable damage. The sheer force of the fire was awe-inspiring, yet terrifying to witness. Climate conditions played a significant role in fueling this disaster. A prolonged heat wave had left the region parched and vulnerable, creating a tinderbox of dry vegetation just waiting to ignite. Human activities too contributed to the disaster. Strong winds fanned by a low-pressure system spread the fire rapidly, while previous warnings of an impending disaster were tragically ignored. As the wildfire began to spread, firefighters and emergency नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वर्तमान समय में दोस्तों मध्य प्रदेश के कई भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और 15 मई के दिन भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाले हवाओं के बीच जो दक्षिण मध्य प्रदेश के ज़िले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरी, शहडोल, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। और कुछ ज़िले ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 मई के दिन ऑल ओवर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ भी सक्रिय हो रहा है मौसम और अरब सागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाला है आने वाले आगामी दिनों में। हालांकि 16 मई के दिन बारिश की संभावनाएं हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर देखी जा सकती हैं। उज्जैन से लेकर थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं और जो उत्तरी मध्य प्रदेश के ज़िले हैं गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। और वहीं दोस्तों जो पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़िले हैं इन भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, ढिंडोरी, मांडला, बालाघाट के भागों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है और समूचे हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 मई के दिन देखिए फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। यानी दोस्तों सक्रिय बारिश वाले बादल अरब सागर की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों पर पहुंच चुके हैं। यानी मोटी परत वाले बादलों के बीच मध्य प्रदेश के इन भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बन सकती है। बैतूल से लेकर भोपाल के आसपास के इलाके और इधर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, इन भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर जिलों पर मौसम साफ भी बना रहेगा, जैसे कि
पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 18 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 मई के दिन कितना बदल सकता है मध्य प्रदेश का मौसम। 18 मई के दिन भी आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री ले चुका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसके चलते दोस्तों बारिश वाले बादलों के बीच मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। यानी जबलपुर से लेकर उमरे शहडोल और छिंदवाड़ा होशंगाबाद नरसिंहपुर के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और इधर दोस्तों बारिश वाले बादल पूर्व की दिशा की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों को प्रभावित करेंगे और इन भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा दोस्तों। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी संभावना बनी रहेगी।